Hello my dear students, welcome you all to Mahi tutorials. Today in this video, we are going to discuss about the respiratory system of frog. So let us quickly begin. Frog, land or water में different respiratory organ की मदद से respire करते हैं. When in water, skin acts as respiratory organ. इस mode of respiration को cutaneous respiration कहा जाता है. वाटर में मौजूद डिजॉल्व ऑक्सीजन के एक्सचेंज फ्रॉग की स्किन से डिफ्यूजन प्रोसेस के जरिए होता है. हाइबरनेशन और एस्टिवेशन के टाइम पर भी फ्रॉग की स्किन ही रेस्पिरेटरी ऑर्गन की तरह एक्ट करती है. व्हेन ऑन लैंड, बकल कैविटी, स्किन एंड लंग्स एक्ट्स एज रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स. नॉस्ट्रिल से एयर बॉडी में एंटर करती हैं, फिर बकल कैविटी के पास होकर लंग्स में जाती हैं. फ्रॉग के लंग्स एलोंगेटेड पिंक कलर्ड सेक लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, प्रेजेंट इन द अपर पार्ट ऑफ द ट्रंक रीजन दैट इज इन द थोरैक्स. तो फ्रॉग्स में स्किन, बकल कैविटी, लंग्स, ये तीनों स्ट्रक्चर्स एक्ट्स हैज रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स. इसी तरह के शॉर्ट और क्विक रिवीजन वीडियोस के लिए stay tuned with Mahi tutorials. If you haven't subscribed to our channel, make sure you subscribe to our channel, and if you haven't joined our Telegram channel, make sure you joined it. The link is in the description. If you have understood the respiratory system of frog, then do like this video. See you all in the next video with the vascular system of frogs. Thank you so much for giving your time.